गुड इवनिंग एवरीवन। एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज आ रही है? So dear friends, when we want to enter the home, first we are looking the home from the outside, then we are entering in the home and we are looking each and every room properly. तो किसी भी चीज को पहले हम बाहर से ओवरव्यू करते हैं और बाद में उसके बारे में और ज्यादा डिटेल में हम जाते हैं। तो हम कान को ऐसे ही समझेंगे, पहले हम कान को बाहर से ओवरव्यू करेंगे और उससे क्या फायदा होगा। अगर किसी ने हमारी सिर्फ 3 दिन क्लास अटेंड की, जो हमारी 3 दिन फ्री है, तो उसके लिए भी बड़ा काम हो जाएगा और वो भी कई सारे ट्रीटमेंट कर पाएगा। तो हमारा पर्पज है कि जो लोग हमारी 3 डेज फ्री क्लास ज्वाइन कर रहे हैं वो भी 3 दिन के बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें कुछ ना कुछ। So our target is this: whether you are joining only for 3 days, you should start some treatment. So I want to go through and I want to overview the ear so that you can do something very and you can help someone. So now, in the last class, we already understood the anatomy of the ear. हमने कान की एनाटॉमी के बारे में बात की थी। अब आज हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। So let's see now. If you have any questions, you can put in the chat box. Okay, I will see the volume. Give me 1 minute. Volume is okay or low? Okay, yeah, thank you. So yesterday we have discussed about the auricular therapy, and we have discussed in the ear we are having our image like the inverted fetus, head down, feet up. हमारा शरीर जैसे माँ के गर्भ में बच्चा होता है, ऐसे ही हमारे कान में हमारा संपूर्ण शरीर पाया जाता है। और इसके बारे में हम इसे कहते हैं अपसाइड डाउन फीटस। इस पोजीशन को कहते हैं अपसाइड डाउन फीटस। तो कान में हम निडल भी लगा सकते हैं, प्रेस निडल भी लगा सकते हैं, सीड्स भी लगा सकते हैं, हम आपको सब बताएंगे। सो डू नॉट वरी, I'm going to tell you everything, whether the press needle or the press seed or the needle, right? Then yesterday we have discussed about the 21 structures in the ear. कान में पाए जाने वाले 21 स्ट्रक्चर्स की हमने कल बात कही थी और हमने इन सब के बारे में डिस्कशन किया था। सो अगर आपने कल ज्वाइन ना किया हो, कल मतलब परसों, तो आप हमारा पुराना वीडियो देख लीजिएगा। So you can go and see the old video, means which we have done on the 17th January, and we have discussed these all the 21 parts. So this is the anatomy of the ear. Now, so first we'll go and see the overview of the ear, then we'll see the detailed description of the ear. तो पहले हम एक बार ओवरव्यू करते हैं, और एक बार ओवरव्यू हो जाए, आपके हाथ में एक थोड़ी सी चाबी लग जाए जो लोग नए हैं, और कुछ ना कुछ आप स्टार्ट कर दें, फिर हम उसका डिटेल भी देखेंगे। We will also go in the detailed description of the ear. So there are two types of approach how to do the treatment. There are two types of approach. The approach number 1, general and very easy approach of the treatment. पहली अप्रोच होती है कि बड़ी ही आसान सी जनरल अप्रोच, और दूसरी होती है स्पेसिफिक अप्रोच ऑफ द ट्रीटमेंट। इसमें प्रोटोकॉल फॉर्मेशन करते हैं, स्पेशलाइज्ड प्रोटोकॉल फॉर्मेशन करते हैं। So now first I would like to tell you the general and easy approach of the treatment, then we will also discuss the specific approach of the treatment. तो पहले हम बात करेंगे कि बिल्कुल जनरली, बहुत जिसको कुछ भी एनाटॉमी नहीं पता, फिजियोलॉजी ना पता हो, वो भी जनरल अप्रोच का प्रयोग करके कैसे ट्रीटमेंट कर सकता है,
और बाद में हम बात करेंगे कि स्पेसिफिक अप्रोच। तो जनरल अप्रोच इज सो इजी, इवन द person who is study in the class 5 who can do the general approach of the treatment, but for the specific approach we will learn little more. So let's start with the general approach. तो सबसे पहले हमने बात कही थी हेलिक्स. What is helix? The helix is this outer rim or the outer covering. So this is the helix. This is the helix. So helix means outer rim. Helix means outer covering. Outer covering, right? हमारे शरीर का सबसे बाहर का भाग है क्या? स्किन. अगर मैं आपसे पूछूं हमारे शरीर का सबसे बाहर का भाग क्या है, आप बोलोगे स्किन. ऐसे कान का सबसे बाहर का भाग क्या है, हम बोलेंगे हेलिक्स. सो हेलिक्स इज इक्वल टू स्किन. सो हेलिक्स इज इक्वल टू स्किन और हेलिक्स इज इक्वल टू आउटर बॉडी, राइट? तो अगर आप हेलिक्स को ट्रीट करते हो, आप सोरियोसिस को ट्रीट कर सकते हो, एक्जिमा और अलग अलग प्रकार की चमड़ी के रोगों को ठीक कर सकते हो. You can treat the multiple types of the skin disorder if you treat the helix, because helix is the outermost part and outermost part is this skin. और हमारे शरीर में जितनी भी ओपनिंग्स होती हैं, ओपनिंग का मतलब है कि यूरिन पास करने के लिए यूरिनरी ओपनिंग बाहर होना जरूरी है. स्टूल पास करने के लिए एनस की ओपनिंग बाहर होना जरूरी है. हमारे माउथ की ओपनिंग बाहर है, बेजाना की ओपनिंग बाहर है. तो जितनी भी ओपनिंग्स होती हैं वो कहां होती हैं? बाहर होती हैं. All the opening of the body is also located outside. Then only we can connect with the external. Like we want to expel the urine, we want to expel the stool, and we want to eat the food. So something coming from the external side and going inside. So these are the boundary between external and internal. ये सारी की सारी आपको हेलिक्स पर मिलेंगी, क्योंकि हेलिक्स is the outermost part of the body. So we can treat any problem of the urinary pathway, if any problem of the anal pathway like the piles, if any problem of the mouth like the mouth ulcer, any problem of the vagina like vaginal discharge, any problem like I already told piles. तो हमारे बाहर ओपनिंग में जब कोई भी तकलीफ होती है, जैसे किसी को यूरिन की तकलीफ हो जाए, पाइल्स या एनल पाथवे की तकलीफ हो जाए, या किसी को मुंह में छाले पड़ जाए, मुंह में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, किसी के बेजाना में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, किसी के पाइल्स में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो ध्यान रखिएगा ये सारी ओपनिंग्स वो ओपनिंग है जो हमें बाहर से कनेक्ट करती हैं. तो ये बाहर ही मिलेंगी और बाहर मतलब हेलिक्स. सो वी आर फाइंडिंग दीज ऑल द ओपनिंग्स आउटसाइड. So these all opening are available here. So as per the Dr. Nogier कहते हैं, क्या कहते हैं, हम थोड़ा सा हम चाइनीज ऑरिकुलर की बात कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में हम डॉक्टर नोगियर की भी बात करते रहेंगे. सो एज पर द डॉक्टर नोगियर, इफ यू do the treatment randomly just on the helix, put the seeds, put the needles, or do the treatment randomly around the helix. This is the wonderful treatment for psoriasis, eczema and all types of skin disorder. अगर किसी को चमड़ी का रोग है, एक्जिमा, सोरियोसिस, हम जानते हैं कि बड़े हटीले रोग होते हैं, रोग जाता है और आता है. तो क्यों ना हम पेशेंट को सिखा दें, या ना सिखाना हो तो हम उसको वीक में एक बार बुलाकर कान के बाउंड्री पर सीड्स लगा दें और उसको बोलें कि एक वीक के बाद आना. So in this way we can treat all the unwanted problems happening over the skin, whether it's the wart on the skin, hardening of the skins, or the any problem of the skin, we can treat just by helix. Helix means outer rim. Outer rim. ओके, तो ये बड़ा ही शानदार ट्रीटमेंट है. इसे हम अक्सर एक्जिमा के लिए यूज करते रहे हैं. एक्जिमा में हमारे पास कोई पेशेंट आता है, हम उसको कुछ नहीं रैंडमली कान के चारों तरफ सीट्स लगा देते हैं या निडल लगा देते हैं. जैसे ये हमारी ऑरिकुलर सीट्स हैं, दीज आर द ऑरिकुलर सीट्स. तो हमने सीट्स को लिया
और बस कान के ऊपर ऐसे रैंडमली लगाते चले गए। हमने ये पूरे हेलिक्स पर रैंडमली आप लगा दीजिए, रैंडमली, नॉट स्पेसिफिकली। तो अगर आपके पास कोई भी रोगी है जिसे स्किन का प्रॉब्लम है, आप लगाइए और देखिए कि ऑरिकुलर थेरेपी इज द मोस्ट इफेक्टिव थेरेपी फॉर दीज और प्रॉब्लम। मैंने देखा है कि ल्यूकोडर्मा के लिए, विटिलिगो के लिए और स्किन के अलग अलग प्रकार के डिसऑर्डर्स के लिए ऑरिकुलर थेरेपी इज नंबर वन। ऑरिकोथेरेपी इज नंबर वन फॉर ल्यूकोडर्मा, फॉर स्किन डिसऑर्डर, फॉर eczema, psoriasis, for these all problems. So just this is for the demonstration purpose. Now you can put the seeds all around till the lower part of the helix. तो आप इस तरह से सीड लगा के छोड़ सकते हैं और थोड़ा प्रेस कर दीजिए, लगे रहने दीजिए, या फिर आप निडल भी लगा सकते हैं। These are the needles. You can also put the needle. These are the very tiny needles. आप देखेंगे कितनी tiny needles हैं, कोई दर्द नहीं करती हैं इतना। So you can put the needle randomly. So these are the sujok needle, because earlier people used to use this needle for sujok treatment, but we are also using this for auricular. So in this way, look at here. हम जब खुद को लगा, मे बी खुद को लगा रहा हूँ, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मेरा पर्पस समझिए। व्हाट आई वांट टू टेल यू, वी हैव टू पुट द निडल ऑन द हेलिक्स, ऑन द बाउंड्री ऑफ द हेलिक्स, और हमें सीड लगाना है कहां पर? बाउंड्री ऑफ द हेलिक्स पर। क्या ये बात समझ में आती है? इज इट इजी और डिफिकल्ट? टेल मी whether you feel it easy or difficult. Can you do this? क्या आप psoriasis वाले पेशेंट को ऐसा कर पाएंगे? Will you able to do this? और ठीक होगा, इतना करने मात्र से ही ठीक होगा। आप करके देखिएगा। Many times some patient calling me, they are suffering with the skin disease, but we cannot come to you. Can you do something? Can you suggest something? Then we are telling yes, you treat the rim of the ear, do the massage, put the seeds. Oh, we don't have seeds, no problem. Put the methi seeds, fenugreek seeds all around the ear and change every day. If you are putting the fenugreek seed, change every day. तो कई लोग बोलते हैं कि हम आ नहीं सकते, क्या कुछ बताओ कि हम घर बैठे बैठे कर पाए। चमड़ी का रोग है, अभी हम जानते हैं कि 2 सालों से लॉकडाउन चल रहा है, बड़ा डिफिकल्ट है लोगों का आ पाना। लोकल लोग भी बड़ा आने में हेजिटेशन फील करते हैं, और दूर से तो कैसे आएंगे। तो हम उन्हें यही सजेस्ट करते हैं, डोंट वरी, वी सेफ एट योर होम and just put the seeds around the helix, all around the helix. So this is a very good treatment for the skin, psoriasis, eczema, and not only for the skin but outer openings. Now someone is suffering with a UTI, urinary tract infection, same treatment. Someone is suffering with a vaginal problem, same treatment. Someone is suffering with the piles, same treatment, because we can also do the treatment of the piles with the outer rim. हम piles का treatment भी outer rim से कर सकते हैं। Got it? अब बात आती है, अब मान लो आप जब और थोड़ा सीख जाओगे तो हम एक स्टेप आगे का ट्रीटमेंट करेंगे। When you will learn little more, then we will do the treatment one step ahead. तो क्या होगा वो? इतना सिंपल सा ट्रीटमेंट है कि आपको बस कान में रैंडमली निडल से थोड़ा थोड़ा ब्लड निकालना है, नॉट राइट नाउ बट आफ्टर फ्यू डेज। अगर आप कर सकते हैं तो आपका मन में प्रश्न आएगा, उससे क्या होगा? द सेम डिसीज वाज वेरी वेरी एक्यूट इन्फेक्शन, यू विल क्योर, you will able to work on the acute infection very fast. जब क्या होता है कि ब्लड लेटिंग से क्या होता है कि तुरंत इन्फेक्शन निकल जाता है। मान लो किसी ने बोला कि टेरिफिक इचिंग, डू राइट नाउ समथिंग, अभी कुछ करो, सहन नहीं होता, अभी नहीं करोगे तो मैं एलोपैथी के पास जा रहा हूं, स्टेरॉइड ले लूंगा। So what to do? So if we put the seeds, it might work maybe in the 1 day, 2 days start working,
but if we take out one drop blood from each point, it will work in 5 minutes or the 7 minutes. Okay, so ear, and it's very safe. Now suppose you are feared, oh, I can't do that, no problem, you call the nurse and tell her, okay, do this. So nurse is doing under guidance. Okay, but it's very easy. I'm going to teach you in this course. Bloodletting is the easiest method इफ यू डू इन द ईयर. आप बॉडी में करोगे तो भले एक बार मन में डर रहेगा यार बॉडी में कैसे करें, लेकिन कान में ब्लड डेटिंग करना इतना आसान होता है. मैंने बहुत से पेशेंट्स को किया है और बड़े गजब के रिजल्ट्स मिले हैं. अभी हम और भी देखेंगे. सबसे ज्यादा रिजल्ट मिलते हैं जब हम अपेक्स को ब्लीड करते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे और हम डेमोन्स्ट्रेशन भी देंगे आपको. So now we are proceeding ahead. So this was the treatment of psoriasis eczema, and we are treating the helix. Why we are treating the helix? Because helix is the outermost part of the ear and we want to treat the outermost part of the body. So skin is equal to body, right? और अगर कोई व्यक्ति मसाज भी करता रहे तो भी फायदा मिलेगा. So you can suggest the patient as a homework, do the massage every day. Now let's proceed ahead. अब हम आगे बढ़ते हैं. See, whether it's the melasma, क्लोइज्मा, पिंपल्स, एक्ने, चाहे मेलिज्मा हो, पिगमेंटेशन हो, पिंपल्स हो, एक्ने हो, वो सब स्किन पर ही है, बाहर ही है. स्किन हार्ड हो जाए जिसे हम बार्ट्स कहते हैं, कुछ भी स्किन में होगा, यही प्रोटोकॉल काम करेगा. द सेम प्रोटोकॉल विल वर्क. सो लेट्स गो इट. अब हम आगे बढ़ते हैं. सो डोंट वरी, ये हमने पीडीएफ आप लोगों के लिए ही बनाया है, तो आपको कोर्स वेबसाइट में मिल जाएगा. So now we are proceeding ahead. Now we will move. We have come did the general discussion of the helix. हमने helix का general discussion कर लिया. अब हम आगे बढ़ते हैं. अब हम देखेंगे एक अगले parts that is called crus of helix. Crus of helix. Now look at here. So you can see this is the chest. ये हमारी छाती है. This is the chest. And this is the abdomen. ये नीचे पेट है. This is the abdomen. And who is separating chest with the abdomen? So the diaphragm is the structure who is doing separation between chest and abdomen. हमारे छाती और पेट के बीच की जो बाउंड्री होती है, जिसे हम डायफ्राम कहते हैं, हम जानते हैं. ओके, ये बाउंड्री बड़ी गजब की है. This boundary is very much important. So the diaphragm is the boundary between chest and abdomen. और ये एक ऐसी बाउंड्री है जिसमें एक भी लीकेज नहीं है. There is not a single leakage in this boundary. It is a very tough boundary between the chest and abdomen. इसे कहते हैं डायफ्राम. तो अगर मैं आपसे पूछूं बताइए व्हाट इज द डायफ्राम, आप बोलेंगे कि डायफ्राम का अर्थ है कि वो बाउंड्री जो छाती को पेट से अलग करती है. सो यू विल एक्सप्लेन अबाउट द डायफ्राम. इट इज सेपरेटिंग चेस्ट विद एब्डोमेन. नाउ वी आर कमिंग टू द ईयर. अब हम कान में आते हैं. कान में हमारा शरीर उल्टा होता है. तो उल्टा होता है मतलब ये तो सिर हो गया, और ये हमारी छाती हो गई, ये हमारी छाती हो गई, और ये हमारा पेट हो गया, और इधर हमारा जेनिटल्स हो गया. So if we see the ear, so this is the head region, then we are having, this is the chest region, this is the chest region, then we are abdomen, then the genitals. Okay, so now the boundary between chest and abdomen, this is the diaphragm. इसे diaphragm कहते हैं. अब फिर से देखिएगा, अब मैं आपको फिर से diaphragm दिखाता हूं. So the diaphragm is this. So this is the diaphragm. The crus of helix is nothing but diaphragm. Crus of helix is diaphragm. अब इसका मतलब क्या है? अब इतना गजब का मतलब है, आप इसको समझिए. So for making this clear, I will take you to the other image. अब मैं आपको एक दूसरी इमेज में ले जाना चाहता हूं. Let's see here. Look at here.
सो दिस एक्यूपंक्चर साइंस इज द साइंस ऑफ माइक्रोसिस्टम। एक्यूपंक्चर का साइंस एक ऐसा साइंस है जो माइक्रोसिस्टम के ऊपर काम करता है। इट्स वर्किंग एज पर द कंसेप्ट ऑफ माइक्रोसिस्टम। सो लुक इट हियर, इसको देखिए जरा। सो देयर इज ए चेस्ट माइक्रोसिस्टम, there is a chest microsystem. As per the chest microsystem, this is the head region. These are the, we can consider this is the head region. Okay, we'll make once again. So I want to show you the chest microsystem. So this is the sternum bone. ये हमारी sternum bone है। स्टर्नम बोन हमारे संपूर्ण शरीर का रिप्रेजेंटेशन करती है। ये जो हड्डी है ये हमारे संपूर्ण शरीर का रिप्रेजेंटेशन करती है, यानी इस हड्डी में हमारा संपूर्ण शरीर है। ऊपर है सिर, फिर है छाती, फिर है पेट, और सबसे नीचे है जेनिटल्स। So this sternum is doing the representation of the whole body. So the upper part is head, then the chest, then the abdomen, then the genital. My focus is there here. What I want to tell you, this. This lower part, which is very near to the diaphragm, this is the genital part. So this is the genital part as per the chest microsystem. जब हम डायफ्राम की मसाज करते हैं तो जेनिटल प्रॉब्लम ठीक होती है। अगर किसी को किसी भी तरह की कोई भी जेनिटल प्रॉब्लम हो, जैसे किसी को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, स्पर्म का निर्माण ठीक से नहीं होता, मोटिलिटी कम है, ओवरी में सिस्ट है, यूट्रस में गांठें हैं, इफ एनी मेल और फीमेल सफरिंग विद एनी टाइप्स ऑफ द जेनिटल प्रॉब्लम, एनी टाइप, ओवरियन सिस्ट, यूट्राइन फाइब्रॉइड, लो मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म or infertility, impotency, just do the massage. Just do the massage at the lower part of the diaphragm, because as per the chest microsystem, head, chest, abdomen and genitals. So these are the genitals. इसीलिए मर्मा शास्त्र में कहते हैं कि मर्मा शास्त्र में इस मर्मा को पाल मर्मा कहते हैं, और कहते हैं जब हम पाल मर्मा को दबाते हैं तो पाल मर्मा को दबाने से मेल और फीमेल की जेनिटल प्रॉब्लम ठीक होती हैं. सो व्हेन वी आर डूइंग द स्टिमुलेशन ऑन द पाल्मर्मा, it is working on the male female genital problems. So now if you do the massage of the diaphragm, it's a wonderful for the genitals. So in the ear also, अगर हम Crus of Helix की मसाज करते हैं तो हम जेनिटल प्रॉब्लम को ठीक कर पाते हैं. इट्स ए वंडरफुल अप्रोच. BFC, आपके पास कोई भी पेशेंट आता है जेनिटल प्रॉब्लम लेके, आप सिर्फ डायफ्राम पे फोकस कर दो और डायफ्राम को ट्रीटमेंट देना चालू कर दो. जस्ट फोकस ऑन द डायफ्राम, गिव द ट्रीटमेंट ओवर द डायफ्राम and you will improve the virility, sexual potency, infertility, ovary problems, uterine problem and all. So in this way, this Crus of Helix is the wonderful for all the genital problem. How to do the treatment? You can put the needle randomly here, because right now we are working on the general approach. अभी हम general approach की बात कर रहे हैं. आप इस पर random needle लगा दीजिए या फिर इस पर सीड्स लगा दीजिए. आप इस पर सीड्स लगा देंगे प्रतिदिन, आप देखेंगे कि मासिक स्राव का दर्द कम होने लगेगा धीरे धीरे, और ओवरी में गांठ होगी तो वो धीरे धीरे पिघलने लगेगी. सो यू विल एबल टू क्योर द ओवरियन सिस्ट एंड द मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, इवन द स्पर्म काउंट. नाउ वन मोर थिंग, एक बहुत ही गजब की बात है कि आपने क्रुस ऑफ हेलिक्स को देखा, और क्रुस ऑफ हेलिक्स को देखकर आपको यहाँ पर छोटी सी गांठ मिली, और गांठ मिली तो आप पेशेंट को बोल सकते कि भाई तुम्हारे जेनिटल पार्ट में कोई गांठ है. You are having some nodule in a genital part. Suppose there is a nodule anywhere here, nodule. Then we can declare to the patient, you might be having nodule, might be in the ovary or in the uterus or somewhere in the genitals part. अगर मेल को है तो मेल को भी सावधान रहना पड़ेगा. फ्यूचर में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो सकती है और टेस्टिकुलर प्रॉब्लम हो सकती है, या नपुंसकता जैसी बीमारी हो सकती है. और अगर फीमेल को है तो उसे ओवरी में सिस्ट हो सकता है, यूट्रस में गांठें हो सकती हैं. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट that is called Crus of Helix or the diaphragm
for all the genital problems. One more thing I would like to tell you. अब मानो कि किसी को बहुत, हम जानते हैं कि डायफ्राम की क्या वैल्यू है हमारे शरीर में. What is the value of diaphragm? Diaphragm is the organ who is helping in the breathing. When we do this, lungs is expanding, and diaphragm is pulling the lungs downward. So diaphragm is also the very good organ. Diaphragm is the wonderful organ if you want to improve the breathing problems, right? So always focus on the diaphragm. रोज के कंपेयर में आपका साउंड वॉल्यूम थोड़ा लो कर रहा है. ओके, 1 minute, I will check my sound. So as per the daily, you are feeling low sound. Give me 1 minute, I will check it. Microphone. Hello. Okay, actual speaker. Okay. See, might be because from here it's everything is okay. Okay. Sarabjit, the sound is okay? Okay. Fine. Okay, thank you. Thank you. Fine. So let's go ahead. तो डायफ्राम का क्या रोल है बताइए. What is the importance of the diaphragm in the human body? ये बताइए, अगर किसी को हिकअप्स आते हैं, why we are getting the hiccups? Because diaphragm is pumping. So diaphragm is getting nerve supply from the nerve. The name of that nerve is phrenic nerve. Phrenic nerve is stimulating the diaphragm, so it is pumping. तो बताइए हिचकी क्यों आती है? हिचकी क्यों आती है? What is the reason of hiccups? Can anyone tell? हिचकी क्यों आती है? As per your mother, as per your grandmother, why the hiccups are coming? What your mother telling? What your grandmother telling? Tell me. When you are getting the hiccups? कहते हैं कि कोई याद करता है, लेकिन मुझे लगता है कि जब हमारा दिमाग और कहीं होता है तब हिकअप्स आते हैं. Because we are eating, suddenly our mind is somewhere else and it is going in the wrong way, we are getting the hiccups. तो कोई हमको याद नहीं करता, हम किसी को याद करते हैं तब हिकअप्स आता है. Okay, because if you are eating the food by mistake, it's going in the wrong pathway and you are getting the hiccup. And why it's going in the wrong pathway? Because you are not aware and your mind is somewhere, right? So we are telling, oh, someone is missing you. No, you are missing someone. Your mind is somewhere else. Fine. So now, as per the acupuncture, there are many explanations of the hiccups. Okay, right now our main target, diaphragm. Diaphragm is giving pushing action upward. So when someone is having hiccups or any types of the breathing disorders, do not forget diaphragm. Do not forget crus of helix. आप crus of helix को मत भूलिएगा, डायफ्राम को मत भूल जाइएगा जब भी आप किसी की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हैं या ब्रीदिंग प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हैं. और इनफर्टिलिटी में तो भूलना ही मत. इनफर्टिलिटी में तो यहाँ के भी डायफ्राम को ठीक करना और यहाँ भी मसाज करना, फिर आप देखना क्या गजब का आपको रिजल्ट मिलता है. यू आर गोइंग टू गेट वंडरफुल रिजल्ट्स in this condition, especially for the diabetic patient, because diabetic patients are losing the essence. Actually हम जिस वीर्य की बात करते हैं, जिस एक्यूपंक्चर में इसे हम जिंग कहते हैं. Someone is telling, oh, I don't want to improve my sexual potency and all, but
This is not only improving the sexual potency, it is improving your jing, it is improving your virya, it is improving your vitality, virility, and it's depend on you whether you want to consume it in the sexuality or in the enlightenment. वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमें इस पॉइंट को जरूर मसाज करनी चाहिए, हमें डायफ्राम की मसाज जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपका जिंग बढ़ेगा तो आपकी वाइटलिटी विरिलिटी बढ़ेगी, आपके शरीर का इसेंस मजबूत होगा, फिर आप उसे सेक्सुअलिटी में खर्च करते हो या स्पिरिचुअलिटी में ठीक करते हो, वो आपका मन है, वो आपकी अपनी चॉइस है। बट ऑलवेज इंप्रूव द जिंग, बिकॉज जिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर गिविंग यू स्ट्रेंथ। दो तरह के लोग आते हैं, एक पेशेंट जल्दी क्योर हो जाता है क्योंकि इसका जिंग अच्छा है, और एक पेशेंट को क्योर होने में बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि इसका जिंग कमजोर है। सेम थिंग हैपनिंग विद द डायबिटिक पर्सन, बिकॉज डायबिटिक पर्सन losing the jing. So the diabetic person are taking more time, so we should always do the pressure here, give the pressure here, give the massage here for the diabetic person. Let's proceed ahead. Now we will move and see the other structure. अब हम बात करेंगे ट्यूबरकल ऑफ द हेलिक्स और द डार्विन ट्यूबरकल। आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि मंकी क्या सोच रहा है ना, इसे पता ही नहीं होगा, किसी ने इसका इतना सुंदर फोटो ले लिया। ओके, मंकी इज थिंकिंग समथिंग। We can see the very wonderful Darwin tubercle elevated part here. ये इसके कान में इतना elevated part है क्योंकि हमारे कान में इतना visible नहीं होता। So this Darwin tubercle is very visible. I would like to ask you, आप जरा अपना अपना कान देखिए और देखिए कि क्या आपके कान में डार्विन ट्यूबरकल है। काइंडली लुक एट। मैंने अपने कान देखे तो एक में बड़ा एक में छोटा है, डार्विन ट्यूबरकल। I have seen the Darwin tubercle in many patients. In some ear it is very big, and in some we have to search. किसी किसी पेशेंट में बड़े आराम से मिल जाता है और किसी पेशेंट में ढूंढना पड़ता है। किसके डार्विन ट्यूबरकल नहीं है बताइए? Anyone is not having Darwin tubercle? Everyone is having Darwin tubercle. Okay, fine. So the Darwin tubercle is the very important. डार्विन ने क्यों खोजा इसको? आखिर डार्विन को क्या जरूरत पड़ गई इसकी? इसका रीजन ये है कि जब हम डार्विन ट्यूबरकल को एक्यूप्रेशर करते हैं, it's a wonderful point for sciatica pain. Now we'll go ahead and I will show you here. Look at here. You can ask me why it's good for sciatica. आप कभी भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों? So let's see here. So we can see the head is here and the spine is here. Okay, ये हम बाद में देखेंगे. Okay. So the Darwin tubercle is at the level of lumbago. ये हमारा lumbago है, कमर दर्द है. Darwin tubercle at the level of lumbago, and Darwin tubercle dividing ear in 1/3. So this is the upper 1/3, then this is the middle 1/3, and this is the lower 1/3. So Darwin tubercle dividing the ear in the 1/3 part, and the Darwin tubercle is the very good point for the sciatica pain. ये sciatica pain के लिए बड़ा गजब का point है Darwin tubercle, क्योंकि इन्वर्टेड इमेजिनेशन के आधार पर ऊपर हमारी sciatica nerve ट्रेवल करती है. For the excellent results, we should treat the Darwin tubercle on the back side. हमें बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट पाने हो तो हम डार्विन ट्यूबरकल को, सपोज दिस इज द डार्विन ट्यूबरकल, ये हमारा डार्विन ट्यूबरकल है, वी आर ट्रीटिंग इट बैक साइड फॉर द बेटर रिजल्ट्स. अब आप पूछोगे कितनी देर में रिजल्ट मिलेगा? नाउ विल टेल यू हाउ मच टाइम इट विल टेक टू गिव द रिजल्ट इन द साइटिका पेन. तुरंत भी मिल सकता है, कुछ समय के बाद भी मिल सकता है. अगर आपने इसमें से 2 बूंद ब्लड निकाल दिया तो तुरंत फायदा मिलेगा, और अगर आपने इसको अच्छी तरह से मसाज करके सीड लगाए तो भी तुरंत फायदा मिलेगा. लेकिन केवल आपने निडल या सीड लगा के छोड़ दिया तो कुछ समय के बाद फायदा मिलेगा. इफ यू वांट टू गेट द इंस्टेंट रिजल्ट, देन टेक द few drops, 1 2 3 drops blood out from here.
Even you can massage this very properly and then put the needle or seed. Then you will get very good results and very fast. But if you're just putting the seeds without doing any massage, then you might get results little later. तो आपको रिजल्ट कुछ समय के बाद मिल सकता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि कान में जब भी हम ट्रीटमेंट करते हैं, हम कान को थोड़ा वार्म करते हैं, वार्म अप करते हैं। जैसे हम जब कोई भी गेम खेलते हैं, पहले बॉडी को वार्म अप करते हैं, उसी तरह से जब हम कान को वार्म अप करते हैं, कान की जनरल मसाज करते हैं, कान थोड़ा रेड हो जाता है, फिर हम पॉइंट लगाते हैं। So because the blood circulation is very high, as soon as we put the points, it will work. So don't do this. Okay, come put 1 point. Finish. No. First do the 1 or 2 minute massage all around the ear. पहले 1 से 2 मिनट सारे कान में मसाज करिए और फिर टारगेट अप्रोच बनाइए। So this was the Darwin tubercle. Darwin tubercle is very good for sciatica pain. The number 2 indication. The indication number 2 of the Darwin tubercle. देखिए पहले आप कान को गौर से देखिए। अगर हम डार्विन ट्यूबरकल की बात करते हैं, द डार्विन ट्यूबरकल, so ear is going like this and Darwin tubercle is like this. This is the Darwin tubercle. So in the Darwin tubercle we are having high amount of energy, high amount of energy. जैसे हम गुब्बारे में हवा भरते हैं तो गुब्बारा फूल जाता है, ऐसे ही कान के इस पार्ट में इतनी एनर्जी बढ़ती है कि ये पार्ट थोड़ा सा फूल जाता है। So this part is like a balloon, like filling the air in the balloon. So when there is more energy, this part become like a balloon. So we can see the ballonic part here. तो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। इसका एक बहुत बड़ा फायदा है कि हम जानते हैं कि कई बच्चे बड़ी हाइपर एक्टिव होते हैं। There are many kids are very hyperactive. And this place is the storehouse of the hyperactivity. So this is the storehouse of hyperactivity. If we press this point regularly, then we can work on the hyperactive child. हम hyperactive बच्चों पर काम कर सकते हैं। इस पॉइंट में बहुत ज्यादा एक्सेसिव एनर्जी स्टोर होती है और जब हम इस एनर्जीज को थोड़ा सा ड्रेन करते हैं, दबाकर एक्यूप्रेशर करके, सीड या निडल लगाकर, तो हम बच्चों की हाइपर एक्टिविटीज को कम कर सकते हैं। अब मैं इससे भी एक बड़ी बात बोलने वाला हूं, उसे और भी ध्यान से सुनिएगा। The Darwin tubercle is one of the best point for skin allergy. Skin allergy. One of the best point. So when we want to treat the skin allergies, what we are doing? We are treating the Darwin tubercle, we are treating little below and treating little backside. We are covering this whole area. This is the very good point for the skin allergies. हमने कई पेशेंट्स को क्या किया, हमने यहाँ पर एक छोटा सा सीड लगाकर छोड़ दिया, बस हमने एक छोटा सा सीड लगा के छोड़ दिया और उनको स्किन एलर्जीज में बड़ा फायदा मिला। तो आखिरकार स्किन एलर्जी होती क्या है? व्हाट इज द स्किन एलर्जीज? स्किन एलर्जी मींस देयर इज ए फाइट बिटवीन पैथोजन एंड बॉडी, दैट इज एलर्जी। एलर्जी का मतलब क्या है कि आपने कुछ खाया और बॉडी ने उससे लड़ना चालू कर दिया, तो आपके अर्टिकेरिया हो गया। आपने कुछ खाया, आपकी एकदम सांस फूलना चालू हो गई। So the allergy means your body is doing hyperreaction. Hyperreaction. In the condition of hyperreaction, there is a more energy in the body. You can drain the energies from here. आप ड्राइविंग ट्यूबरकल से एनर्जीज को ड्रेन कर सकते हैं। अगर कोई आपको बोले कि मुझे स्किन एलर्जी हो रही है, बताओ क्या करूं, कान का फोटो खींच के भेजिए और बोलिए कि भाई यहाँ पर एक मेथी का दाना लगा ले। इतना आसान ट्रीटमेंट है भाई। It's a so easy approach, and with the help of this approach, you can treat the skin allergies. देखिए, जब हम मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रंस के ऊपर काम करेंगे तो हम थोड़े ब्रेन के पॉइंट भी यूज करेंगे, अभी ब्रेन आएगा बाद में। सो इफ यू वांट टू ट्रीट द मेंटल रिटार्डेड किड्स and the hyperactive kids, so definitely we are going to treat the Darwin tubercle, but because they are mental retarded, so we also have to use the treatment point of the brain. Okay, then we will able to complete the protocol. तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। डार्विन ट्यूबरकल इज गुड फॉर 3 पर्पज। टेल मी पर्पज नंबर 1, व्हाट इज द पर्पज नंबर 1? डार्विन ट्यूबरकल 3 कामों के लिए बड़ा गजब का है। पहला क्या है बताइए?
I'm waiting for your answer. Wonderful. The first is sciatica. Sciatica. Second, tell me the second things. The Darwin tubercle is very, very good for the second thing. Darwin tubercle, that is hyperactivity. Tell me third thing. Darwin tubercle is very wonderful for third thing, that is allergies. Excellent. Excellent. और ये कोई ordinary point नहीं है. This is the very, very, very special point for allergies. Let's proceed now. अब हम आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करेंगे आपसे एक बहुत ही शानदार बिंदु की, जो बहुत ही गजब का है. इस पॉइंट को हम कहते हैं इसका फटफोसा और SF. So this is the helix. This is the helix. This is the outer boundary or the helix. And the inner side, if we go the inner side, this is the scaphoid fossa और द स्कैफोइड गटर. अगर हेलिक्स के आप नीचे जाते हो तो आपके खड्डा मिलता है. इसे हम गटर भी कहते हैं और फोसा भी कहते हैं, खड्डा भी कहते हैं. इसका नाम है स्कैफोइड फोसा या SF. इसी का नाम है रियूमेटिज्म लाइन. इस नाम से समझ में आया होगा. क्या समझ में आता है अगर मैं रियूमेटिज्म लाइन बोलता हूं तो आप क्या समझते हैं? टेल मी व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग विद द रियूमेटिज्म लाइन. इसी को हम कहते हैं चिकनगुनिया लाइन. चिकनगुनिया, व्हाट इज चिकनगुनिया? डू यू नो दैट? इसी को हम कहते हैं पेन किलर खाई, एंड इट इज वेरी यूजफुल फॉर द मल्टीपल जॉइंट्स पेन. सो फर्स्ट टेल मी व्हाट यू थिंक अबाउट द रियूमेटिज्म लाइन. मैंने कहा कि ये खड्डा है जी, आप देख सकते हैं कान में. दिस इज द ईयर एंड यू कैन सी दिस इज द स्कैफोइड फोसा. Now I am telling you this is the painkiller cave, this is the rheumatism line, this is the chikungunya line. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब किसी को rheumatoid arthritis हो जाता है, उसके छोटे 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 जॉइंट दर्द करते हैं. The person is having pain in the multiple small joints when he is suffering with the rheumatoid arthritis. When someone is suffering with the chikungunya, chikungunya is the common disease found in the India. It might not be in the America. It might not be in the other country, but chikungunya is very common disease found in the India. In chikungunya, person is having fever and the multiple joints pain, small joints pain, stiffness in the joints. So when there is a question of stiffness and pain, we are treating this scaphoid fossa. Got it? तो हम स्कैफोल्ड फोसा को इलाज करते हैं. सो हाउ वी आर गोइंग टू डू द ट्रीटमेंट, लेट्स सी. हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम बस क्या करते हैं कि उनको रैंडमली स्कैफोल्ड फोसा में मल्टीपल पॉइंट्स लगा देते हैं. सो दिस इज अ वेरी गुड ट्रीटमेंट, दिस इज अ वेरी गुड अप्रोच. सो वी आर कवरिंग दिस एरिया फ्रॉम हियर टू हियर. स्कैफोल्ड फोसा और SF. एनी प्रॉब्लम? एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज आ रही है? सो दिस इज कॉल्ड स्कैफोल्ड फोसा. अब देखिए मेरा कान देखिए जरा. सो लुक एट माय ईयर. सो दिस इज द scaphoid fossa. So we can cover from down to up. आपने देखा होगा मैंने एक इसके अंदर एक निडल लगाई है. So this needle is inside the scaphoid fossa. So in this way we can treat even our problems. You can see. So we can fill from here to down. हम यहाँ से यहाँ तक 4-5 निडल लगा सकते हैं. From here to here we can fill whole scaphoid fossa, or we can put the seeds. हम seeds भी लगा सकते हैं. So what we can do, we can put the seeds. So starting from here, then going in this fossa till the upper side, covering whole fossa, covering whole gutter. So this is a very good treatment for the chikungunya.
मल्टीपल जॉइंट्स पेन, जब हम छोटी निडल लगाते हैं तो कम से कम 40 मिनट के लिए लगानी होती है. वी आर पुटिंग द निडल फॉर 40 मिनट एंड वी कैन पुट द सीड्स फॉर 7 days. हम सीड तो 7 दिनों के लिए भी लगा के रख सकते हैं. द मैक्सिमम टाइम ऑफ द निडल इवन 2 to 4 hours. कई पेशेंट्स बड़े फेमिलियर हो जाते हैं तो उसको हम 2 से 4 घंटे भी निडल लगा के छोड़ देते हैं, बट द मिनिमम टाइम 30-40 मिनट, इवन 30-40 मिनट इज इनफ. So scaphoid fossa is the very good for scaphoid fossa is the very good for rheumatoid arthritis. So that's it is called rheumatism line or the chikungunya line, painkiller cap, multiple joints pain. So in the when we are telling it rheumatism line, so what we are doing, we are connecting these all points together. We are connecting these all points together like that. तो सारे पॉइंट को हम ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, फिर हम इसे कहते हैं दिस इज द rheumatism line. ये rheumatism line है. अब बात आती है, so scaphoid fossa is the specialized for upper limbs. आगे चल के हम देखेंगे कि हमारा सिर नीचे है और यहाँ पर हमारा पूरा आर्म आता है. अगर किसी को कंधे में, कोहनी में, उंगलियों में दर्द है तो हम इस scaphoid fossa को ट्रीट करते हैं. So the scaphoid fossa is the specialized for the upper limb. So we have to treat the scaphoid fossa for any problem happening in the upper limb, whether it is the problem of the shoulder joints or the elbow joint or the wrist joint or the fingers. चाहे कंधे की प्रॉब्लम हो, कोहनी, कलाई और उंगलियों की प्रॉब्लम हो, इन सारी कंडीशंस में हम scaphoid fossa को ट्रीट करते हैं, राइट? So this was the little description about the scaphoid fossa. Now we'll proceed ahead. अब हम कल, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है. अब हम कल बात करेंगे और कल हम अपना, कल मतलब परसों, और हम ईयर अपेक्स से स्टार्ट करेंगे. ईयर अपेक्स, और या फिर ईयर अपेक्स भी समझ लिया जाए. व्हाट डू यू वांट? ओके, सो नाउ विल डिस्कस ऑन द फ्राइडे. फ्राइडे को आप इसी लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं. Now we'll go ahead and keep on discussing, and this is a very big course. This is just starting. ये सिर्फ स्टार्टिंग है. ये बहुत ही बड़ा कोर्स है. ये हमारा 3 महीने चलने वाला है. अब आप सोचिए कि आप 1-2 दिन में इतना सीख गए हैं, 3 महीने में आप कितना सीखेंगे. Within 3 months you are going to learn a lot. So this course we are keep on doing for 3 months, alternate days. So this is the just second days. Thank you so much. If anyone having any query, you can send me WhatsApp. इस कोर्स के रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ उन लोगों को मिल जाएगा जिन लोगों ने कोर्स के लिए एनरोल किया है ना. जिन लोगों ने कोर्स के लिए एनरोल किया उनको वेबसाइट पर मिल जाएगा, ठीक है? बिकॉज पीडीएफ इज वेरी लॉन्ग. पीडीएफ इज 400 पेज पीडीएफ. इट्स वेरी लॉन्ग and we will make it available on the website. So thank you so much. Now closing the session. See you on Friday.